Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. अस्सलामु अलैकुम सामीन 6 शाबान और मुअज़्ज़म और 5 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है ओवैसी की वार्निंग। ये वीडियो बयान आपने सुन लिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया है। बयान अंग्रेज़ी में है, जिसका मतलब ये है कि हम वक्फ़ की 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। हम औक़ाफ़ की 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये खालिस मुस्लिम मामला है, इसमें किसी और का दखल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा।